the tarot card reader will see the card and will be able to tell you things like कि आपकी नौकरी कब लगेगी कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, या आप अभी completely different zone में हो, अभी आप you should right now just rest for a bit, or you should not think about this, you're not in the situation to take up a new job, या आपकी जो नौकरी लगेगी वो उसका environment कैसा होगा, whether it will be hostile or whether it will be friendly for you, whether you will grow here, ये आपके लिए फलेगा कि नहीं, basically इस type के questions के answers a tarot card reader can definitely give you looking at the card. Okay, blunt question I'll ask you. There is no reason, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे आपको offense करना. जी. कितना काम करता है ये मतलब basically? Hi, I'm Vihanna and welcome to my channel Astrology. This is my first video, so I thought I'll answer some of the questions that I commonly get asked. कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है, डज एस्ट्रोलॉजी वर्क. तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया है जिसके भी इसी टाइप के सवाल है. तो इट्स ऑल अनप्लान्ड, लेट्स सी हाउ इट गोज. मुझे कोई आइडिया नहीं एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी क्या है, टैरोलॉजी क्या है. आप मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे? यार मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको बस लगता है कि ये भविष्य बताते हैं, मतलब कुछ क्लियर आइडिया नहीं. तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे एक लेमैन को? ओके, सबसे पहले तो टैरोलॉजी नहीं है, टैरो है. ओके, सॉरी. ओके, सो ये सवाल मुझे भी हमेशा आते हैं कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, एस्ट्रोलॉजी सच में होता भी है कि नहीं, कि ये मतलब इसके रिजल्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स वर्क करते हैं कि नहीं करते हैं. तो मेरा बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, उन लोगों को समझने के लिए जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आती है. लेट्स लुक एट द नेचर अराउंड अस. डू यू अग्री द नेचर एग्जिस्ट्स? There is air that we breathe, there is sunlight, there are trees that grows, the sun का light जो आता है उससे हमें nourishment मिलती है. ये सारी चीज़ें तो हैं हमारे साथ, हम these are proven, right? ये तो exist करती हैं. ठीक उसी तरह अगर आप देखो तो there are planets. ये तो scientifically proved है कि planets तो है ही. कुछ planets, planets in the solar system जो sun के around revolve करते हैं. So this is so scientifically also proven, and we can also see it with our naked eye. Some of the planets are actually visible. If you see in early morning sky, like Venus is very visible. Yes, it is visible. Look towards your eastern direction. It moves from east to southeast direction. There is the brightest star in the sky, and that is Venus. तो if the planets are there, अब उनकी एक they are made of, उनकी एक composition है. अब वो अपना energy जो है वो radiate करते हैं ठीक sun की तरह, which is emitting sunlight and it reaches earth. Similarly ये सारे planets हैं, इनकी अलग अलग compositions हैं, और ये अपनी energy या अपने rays जो emit करते हैं वो earth पे reach करते हैं. Yes. और जब ये रीच करते हैं ये हमारे ऑब्वियसली हमारे ह्यूमन बॉडी को भी हिट करते हैं और हमारी बॉडी इसको अब्जॉर्ब करती है. अब ये हमारे साथ में क्या चेंजेस, हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट करते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे हेल्थ को ये इफेक्ट करता है. तो जब ये होता है तो लाइक व्हेन इट अफेक्ट्स आवर थॉट प्रोसेस, द वे वी थिंक, वी टेक एक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट वी थिंक एंड वी मेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली. द थिंग इज दैट जो रिजल्ट्स भी आते हैं तो वो भी बेस्ड ऑन आवर थॉट्स, एक्शंस एंड आवर रिजल्ट्स. सो दैट इज हाउ द प्लैनेट्स इम्पैक्ट अस. सो to explain to a layman or somebody who doesn't understand astrology at all, I would say that if you believe that the planets exist, their energy also comes to us, and that's how we get the result. Okay, तो मैं इसको थोड़ा जैसे मेरे को लगा वैसे मैं सिंपल लैंग्वेज में वो पूछता हूँ. इसका अर्थ है ये. ओके, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स हैं. सो द प्लैनेट मूव्स, तो वो स्टडी के हिसाब से मेरे बिहेवियर, मेरे लक, ये सब चीजों में चेंज आएगा. यू मीन टू से दिस इन जनरल? यस, सो दिस इज अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. एस्ट्रोलॉजी में इसको किस तरह से रीड किया जाता है, तो जब हमारा बर्थ होता है तो उस टाइम पे यही स्काई पे जो प्लैनेट्स हैं इनकी पोजीशंस, बिकॉज दे आर आल्सो रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, तो इनकी पोजीशन भी चेंज होती है. इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में आपका टाइम ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है, या प्लेस ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है, अलॉन्ग विद द डेट ऑफ कोर्स. सो व्हाट हैपेंस इज एट दैट
point in time, according to the astrological calculation, जो planets जिस जगह पे placed है, let's say some is placed in the eastern hemisphere, some planets are in the western hemisphere, उस तरह से जो वो placement होता है उससे वो chart बनती है, and basis on that all those calculations आपके birth का analysis, आपके chart का analysis होता है. ओके मतलब मैं 4:15 को पैदा हुआ समझो, सुबह 4:15 पे. Yes. तो वो टाइम पे ये जो सोलर सिस्टम में हर एक प्लेनेट कहा था, Yes. वो बेसिस पे व्हाट यू आर टेलिंग मी कि मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट होगा. बहुत कुछ चीजें, not just your future. लाइक So even your past, your childhood, even to an extent, I mean, astrology actually has so much potential. उस पे मुझे तो ये लगता है, I feel sad that only a bit of it is scratched, just surface scratch किया है. It has so much potential. It's so vast. It actually can tell you certain things about your past life. So there is the 5th house of your birth chart, which talks about your past life, या जो आपका जो प्रारब्ध कर्मा है, उसके हिसाब से आपको इस लाइफ में आप बहुत बहुत चीज़ें हैं, बहुत इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको दिखेंगी. तो दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट लाइफ, एंड देन देर इज ऑल्सो द फ्यूचर लाइफ विच इज द 9th हाउस. सो इससे हम बहुत, एंड द फर्स्ट हाउस इज योर प्रेजेंट लाइफ. So what karma you're doing right now in this lifetime, it defines what will happen in your future. सो जैसे आपने टैरो कार्ड, इट्स नॉट टैरोलॉजी, इट्स टैरो कार्ड, या सो टैरो कार्ड के बारे में आपने जो मुझे बताया, सो वी सी इट लाइक जस्ट कार्ड्स. ओके, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली वो कार्ड्स क्या है? वो जो वी से हम लोगों ने जो वो 12 हाउसेस देखे, व्हाट दैट हैज टू रिलेट विद दिस कार्ड, और बेसिक आप मुझे बता पाओ तो बेसिक इसका. Sure. So there is a tarot reader, there are these tarot cards, and then there is a querent, the person who comes with a question, जिसको उसका आंसर चाहिए. अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी कि टैरो हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, बट हाउ इट इज रिलेटेड ऑल्सो. ओके, सो टैरो में ये होता है कि लाइक आई सेड, देयर इज अ टैरो कार्ड रीडर, देयर इज टैरो कार्ड्स, एंड देन देयर इज अ क्वेरेंट हु कम्स विद अ क्वेश्चन. उसका बहुत प्रेसिंग क्वेश्चन होता है बेसिकली इन टैरो के, right now this is the situation and I want an answer to this. सॉरी टू इंटरप्ट इसमें. तो समझो फॉर एग्जांपल, लेट्स से एग्जांपल कि मैं आया हूं आपके पास, स्वराज आपके पास आया है. Right. सो हु एम आई एम द Querent. ओके, सो मैं आपके पास आया एंड आई एम हैविंग एन क्वेश्चन इन माय माइंड, राइट? तो मैं एक सर्टेन एनर्जी के साथ आया हूं, लेट्स से दैट, है ना? सो व्हाट आई पुल आउट द कार्ड, वो मेरे क्वेश्चन, मेरे एनर्जी से रिलेटेड ही चीजों पे मैं अट्रैक्ट होऊंगा. दैट्स व्हाट यू वांट टू से. That's true. And you will see that you will tend to pick up, अगर मैं बार बार भी अगर आप ये कार्ड पिक करो twice or thrice, but there the chances of you picking the same card if you're in that same energy is quite high. And I have seen this over a period of time that the same person who has the same question, अगर उसको मैं 2-3 बार भी पिक करने लगाऊं, so you'll say there is a big deck of cards, तो उसमें से वही particular card कैसे आता है? So it's your energy basically which will make you pull that same card. Yeah. So यही होता है tarot का basically, where you it's your energy, the person's energy with which he's picking, and the tarot card reader will will see the card and will interpret it according to the cards, and it's a Pictionary card basically with numbers and certain elements. उसके basis पे ही वो आंसर दिया जाता है. Okay. So now the tarot card reader will see the card and will be able to tell you things like कि आपकी नौकरी कब लगेगी कि नहीं, कितना टाइम लगेगा, या आप अभी completely different zone में हो, अभी आप you should right now just rest for a bit, or you should not think about this, you're not in the situation to take up a new job, या आपकी जो नौकरी लगेगी वो उसका environment कैसा होगा, whether it will be hostile or whether it will be friendly for you, whether you will grow here, ये आपके लिए फलेगा कि नहीं. Basically इस type के questions के answers a tarot card reader can definitely give you looking at the card. Okay, blunt question I'll ask you. There is no reason, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे आपको ऑफेंस करना है. जी. कितना काम करता है ये, मतलब बेसिकली ये सब चीजें, लाइक मैंने नहीं किया ऑनेस्टली पहले कभी. ओके, आई एम नॉट बीन इनटू दिस. सो लेट्स से देखो, मुझे लगता है जैसे आपके जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें लोग जब बहुत खुश रहेंगे तो आते नहीं होंगे शायद, जी, है ना? तभी आएंगे जब बहुत परेशान है ना? 100%. तो वो जब आते हैं तो उसका कन्वर्जन रेशियो क्या है, लाइक एग्जैक्टली जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके तो सॉल्यूशन कितना है? आई डोंट नो, जस्ट
लाइक लैक ऑफ Yes. बेटर वर्ड मैंने कन्वर्जन ये वर्ड Yeah. यूज किया, बट वो कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड है एस्ट्रोलॉजी बोलो या Right. फिर टैरो कार्ड रीडिंग? Right. So first and foremost, it's an ancient. Both of these are very ancient. Basically, they have been going on for a very long time. It's time tested. If it wouldn't work, it wouldn't exist till now, and it wouldn't be passed on. Like log seekte nahi because for the simple reason that it doesn't work. Of course, it a lot of things works or is associated to a person's belief. If there is a completely scientific माइंड जिसका माइंड है वो पर्सन है वो आएगा ही ये सोचकर पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड आई एम जस्ट कमिंग हियर जस्ट टू टेस्ट द अदर पर्सन. सो ना वो अपनी एनर्जी उस तरह से कार्ड पुल करने में डालेगा जिससे कि उसको राइट आंसर मिले. एंड obviously the other person also gets the vibe, the tarot card reader will also get the vibe. And अगर वो अपनी कितनी भी कोशिश कर ले to give the right answer, the other person has created a mental block and it will he might not follow the remedies or he might not believe it and he might just take a different decision. So in that case it's 0%, it will not work. Oh. But of course if you are open to get answers or to find the direction and you go with it, you go with that faith, then it definitely works for you. And I cannot put a percentage to it, but yeah, in whatever experience I have had, and for my personal experience, I'm not talking about forget me doing reading for anybody, but let's say if I talk about my own journey or my own life, and जब मैं छोटी थी and when I used to, my parents used to take me to an astrologer or a palmist or a face reader and all, I used to be so much in awe because they were able to tell me things about me which which nobody else knew. Nobody else. They were complete strangers, but they could say something just looking at my palm, and I used to be much in awe कि ये कैसे बोल रहे हैं. And once a person can tell certain things about you, you obviously believe in that person कि वो remedies भी जो देगा वो सही देगा. And that's how it works और कुछ नहीं. ओके ओके, मतलब बेसिकली तुम्हारे मन में खुद में फेथ होना चाहिए टेक्निकली पहले. ओके, सो इफ यू आर हैविंग फेथ देन ओनली यू कम. और आई वुड ऑनेस्टली से कि अगर फेथ है तो ही आप विजिट करो. इफ यू डू नॉट बिलीव इन इट एंड यू जस्ट बिलीव 100% योर हार्ड वर्क, योर जो आप सोचते हो, अगर आप वो फॉलो करोगे आपको उसी में रिजल्ट मिलेगा. देन यू जस्ट डोंट नीड टू विजिट एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर, एनीवन फॉर दैट मैटर. ओके, मतलब बेसिकली आपको बोलना फॉर्मूला इज फेथ. Yeah, faith is the formula. मतलब जो भी आप कर रहे हो तो Yes. उसमें आप अपना faith रखो. And Yes. then I also have another formula which I call as the 50-25-25% formula. See, we are born with a certain heavenly luck, okay, which we cannot change. We also call it as our destiny. For example, the family that we are born in, the country, the city, the town, the house that you're born in, basically you cannot change it. It is predestined, it has come with you, right? So that you've come with certain amount of luck that way. The what we can do when we take birth is the other 25%, which is your hard work. आप आते हो, आप after your birth, the kind of choices you make, the decisions you take, the kind of hard work you put in, the field that you want to work in, you choose that, and that decides on certain amount of luck, which I call as the earth luck. Okay, so which is flexible. You can change it, get a little more or less in that, right? But even then, after you have worked hard, you put in your 200%, but you're not able to get the kind of results that you're expecting. That's when the third factor comes in, which I call as the esoteric luck. So the thing is, the creator has already has given us so many things in abundance around us, and there are a lot of these esoteric knowledges जो स्टडी के बाद में आता है, जैसे कि in that comes your astrology, tarot, numerology, vastu, a lot of other things. And this is what is a component which he has given us, which we can use to boost our luck. It no way changes your destiny, or it in no way gives you overnight success. But what you can do is you can get that 25% factor जो बचा हुआ है उसको आप
पुश लक को पुश कर सकते हो, या गाइडेंस की तरह यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि ये वर्क करेगा या ये कौन सा टाइम पीरियड वर्क करेगा, या लेट्स से अ जॉब विल सूट मी और बिजनेस विल सूट मी. इफ यू आर चूजिंग बिजनेस, then what should I go for, a restaurant industry, or should I go for some other kind of industry, like. Yeah. So ये वाला जो फैक्टर है, ये आपको is what is where astrology and other sciences comes into picture. So yeah. बेसिकली जो मुझे समझ में आया इससे इज लाइक, Yeah. मैं जैसे पैदा हुआ, मैं जो घर में आया, मेरे जो पेरेंट्स है उनका जो ऑक्यूपेशन, उससे मैं, इट वाज नॉट इन माय कंट्रोल, Yeah. राइट. तो ये 50% ये निकल जाता है ना. तो जो 25% है वो थोड़ा बहुत मेरे हाथ में, दैट्स व्हाट यू कॉल एज अर्थ लक, कि मैं कौन सा ऑक्यूपेशन लूं, मुझे Right. जर्नलिज्म करना है, एडवर्टाइजिंग करना है, फिल्म करना है, जो भी हो जाए, बट दैट इज नॉट आल्सो पूरे तरीके से मेरे हाथ में. सो वो भी हो सकता है उधर. ये सब करने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं होता है, सो यू आर सेइंग कि दिस 25% व्हिच यू आर कॉलिंग एज एसोटेरिक लक, वो इसके बीच में के जो बाधाएं आता है उसको फोरकास्ट करने में या उसको समझने में हेल्प करता है, एंड दैट विल बूस्ट मी अ बिट एंड कैन चेंज थिंग्स. मतलब वो थोड़ा हल्का डायरेक्शन भी चेंज करेगा तो can make a huge difference in my. Yes, it's not much. It's just that 25%, and not that everybody gets that 25% boost also. किसी को 5%, 10%, 20% भी मिल सकता है, किसी को 25% मिल जाता है उसमें. So it all depends on how what you're getting the right kind of remedy, right guidance. It depends on a lot of things. Depends on that. Now the thing is कि a lot of people, they do not go to astrologers, or they do not see a numerologist, or go for a tarot card reading. So does what happens then? So basically, even they lead a life, they lead their Yeah. normal life, right? Yes. So they still have their destiny that they have come in, they still have their hard work, and it's enough for them. And some people do not even need a lot of boost. Maybe their destiny is only so wonderful that That, they have yeah. used it with their hard work, or the choices that they have made, they have used it to full potential. So some people just gain the factor, but it is only for people who put in, after putting in all the hard work, फिर भी बार बार blockages आ रहे हैं, road they are life smoothly नहीं चल रही है, health problems आ रहे हैं, या जो भी decision ले रहे हैं गलत पड़ रहा है, पैसे का loss हो रहा है, and they are totally बहुत ज़्यादा upset हो गए ये सब चीज़ों से, हार मान चुके हैं. उन लोगों के लिए this is like a saving factor, a saving grace. Yeah. Okay, okay. So just one question from the thing you told me. What made you to come into this? Was your family into this? इसमें थे पहले से, जैसे आपने बोला बचपन में भी आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा था, फैमिली का ही पहले से बिलीफ है इसमें? हाउ यू केम into touch with astrology? Right. So no, honestly, none of my family का दूर दूर तक there was no connection with any of these subjects. Forget astrology. It was like दूर दूर तक बिल्कुल भी इन चीज़ों में belief भी नहीं था. और I just said generally, जब ऐसी फैमिली गैदरिंग हो गई, कोई आ गया, या कभी कहीं पे चले गए तो वहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर मिल गया, हाथ दिखा दिया, या हाथ दिखा दिया, ऐसे just curiosity, and but no, my parents did not believe so much into it, and not that they were completely non-believers, but it's just that they were never so driven to pursue it or anything of that sort. तो बट मुझे हमेशा से एक इंटरेस्ट रहा है. आई यूज्ड टू हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर people who had these special skills, और मुझे हमेशा से लगता था कि they are like they have some अलग type का magical they are blessed to have something, and I can never be like this, but I would be so interested to know कि ये कैसे होता है. I would be interested in finding out, Curious थे. हाँ, हमेशा curious थी, and ये लगता था कि यार अगर काश पता होता कि ये 2 decisions में कौन सा लेना है, and which will really work for me, it would really make my life so much easier, because there used to be confusion. We all go through confusion as a child, कौन सा चीज़ ले, कौन सा career choice करे, या सारी चीज़ों में हमें confusion होता है, right? तो तब ये लगता था, और I used to be very curious. That's what I said, कि but yes, but then what happened is, as life would have it,
I chose fashion designing as my career. I spent 9 years into fashion designing, and I was like completely immersed into it. Got busy with life, marriage, and stuff like life took on, right? But I still feel that destiny had this, had this for me. If I'm into this field, it's like destiny has put me, it just made way and brought me here. So certain things like health factors and then relationship issues and stuff, which drove me, or it kept on pushing me, nudging me towards these esoteric knowledge. So I was always keen on looking at learning numerology, tarot on my own and stuff. But then of course it was only at a later stage that I actually got my education, formal education into it. I've also done NLP. I've studied NLP. I've done What's pranic NLP? healing. NLP is neuro-linguistic programming. Neuro-linguistic programming. Programming. Yeah. Can you elaborate? So, कैसे? तो basically it's about your patterns, about your childhood. आप childhood में जो आपका एक blueprint बन जाता है. Because जब depending on the kind of environment जहाँ पे आप पले बड़े हो, और आपका आपने जो बार बार आपको जो बोला गया है, या आपने जो एक्सपीरियंस किया है, उससे आपके दिमाग में चीज़, जब आप बड़े होते हो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो एक सिचुएशन को, ये इट ऑल गोज बैक टू योर चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग. लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल इफ आई से कि आपका जो ब्लूप्रिंट है टुवर्ड्स मनी, towards earning money. A lot of us have this blueprint that money, जो बचपन में बोला जाता है कि money से ये इंसान बिगड़ जाता है, अरे बड़े बड़े बाप के बेटे होते हैं, या पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं. ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बहुत एक तरह से सबकॉन्शियस में बैठ जाता है. And what happens when we grow up is we start having this kind of a relationship with money, where we do not want, we start feeling that if we have too much money, even that is not good. Okay. And what we do is in इस चक्कर में हम है ना, जब भी हमारे पास ज्यादा पैसे आने की चांसेस भी होते हैं ना, we ourselves sabotage it. So that is a programming which happens in your mind. So इस चीज को, इस पैटर्न को जब हम when we start working on it, that is where NLP comes into the picture. It helps you in reversing this pattern, जहाँ पे आप you become more accepting towards money, you form a better relationship with money, and you're okay to let it in your in your life. So this is NLP, one of the factors in NLP. A lot of other things also it deals with childhood traumas and stuff also. Okay. So मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नाम लगता है कंपनी का, it's like एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड को मिक्स करके you made it एस्ट्रोलॉजी. So what is the thought behind this? मतलब आपने क्या सोचा exactly? और विजन क्या है आपकी कंपनी का? Can you tell me that? Sure. Yes, it is interesting. So the thing is कि मैंने जब मैंने टैरो रीडिंग सीखी, so apart from actually giving the results or reading somebody, telling somebody about their answering their queries, what I found interesting was that it was in a game format. It's about cards. जैसे हम normal playing cards खेलते हैं. This was some Pictionary depicting certain kind of elements and photographs and human figures, animals. ये सारी चीजों का बनता है जो if you find there are a lot of tarot cards actually. So but in the basic ones, this is what it is all about. And the cards बिछाए जाते हैं. You pick a card and then the tarot card reader does the reading. So I found this concept to be pretty interesting, and I felt well. So when I did astrology, and astrology, people know that it's a vast subject. It's a little difficult to understand. Not everybody can become an astrologer because it needs a lot of dedication, years of dedication to become an astrologer, to really understand. Otherwise, you can't do the predictions. Okay, so yeah. Can you tell me exactly how much years it takes? Basically, it can take anywhere from 2 to 3 years to 10 years. It depends on whom you're learning from. It depends on how good you are as a student,
and it depends on a lot of practice. So even 10 years ke baad there will be astrologers who will say that we are still learning and we are still learners. So it all astrology is a very vast subject that way. And yeah, so the thing was, my thought process was to make it, to simplify astrology. And and so astrology has this one subject called prashna kundli. प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि when you go to an astrologer and you have a question, like it could be as simple as कि मेरा ये कीमती सामान घूम गया है, like ज्वेलरी रखी हुई थी and it has been stolen या घूम गया है, मिल नहीं रहा है, and you approach an astrologer. So now this astrologer will not look at your birth chart to find this answer, but will look at the current, जिस टाइम पे आपका ये query आपके दिमाग में आया है या your thing has gotten stolen, your jewelry has gotten stolen, उस टाइम का कुंडली वो बनाते हैं, that time place का कुंडली वो बनाते हैं, and basis on the placement of planets the astrologer gives an answer कि what is the possibility, whether ये दिन में चोरी हुआ है या रात को चोरी हुई है, या which direction it has gone, किस डायरेक्शन में रखा हुआ मिल सकता है, मिलेगा या नहीं, ये सारी चीजों का आंसर एक एस्ट्रोलॉजर देता है. इस तरह से आपका जो करंट क्वेश्चन जो है, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू टैरो, बिकॉज इवन टैरो में आप अपनी करंट क्वेरी लेके आते हैं कि ये जॉब मिलेगी कि नहीं, या ये ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं, या थिंग्स लाइक दैट. सो दिस इज वेरी सिमिलर टू astrology, and tarot and astrology are very similar that way. So here I thought of combining these two sciences, and and also teach astrology in a very simplified way, जहाँ पे ये 12 houses हैं, 12 planets हैं और 12 zodiac signs हैं. And there are houses जो 12 houses हैं. These are corresponding to certain, like the first house is about yourself, how you look, your personality, your basically your outer personality and your thought process. That's the first house. Second house is about your wealth or your extended family. Third house is about your courage, the kind of the challenges that you can take or risks you can take, your younger siblings. Fourth house is about your inner happiness, your house, your car, your vehicle, your mother. Your fifth house is about your child, your firstborn child. The fifth house is about any kind of speculative gains, like share market, ये सब investment करना, and also about your intellect. Sixth house is about your sickness, your illness, some minor illnesses that you go through. About job, whether job will suit you, what kind of job will suit you. It also talks about your and if you take any loan, debt आप लेते हो तो आप चुका पाओगे कि नहीं, आप litigation में जाओगे कि नहीं, some legal चीजों में फंसे रहोगे कि नहीं. So वैसे, then the seventh house is just the opposite of your first house. So first house is yourself. Seventh house is your partner, your life partner. So that is your spouse, your marriage, your married life, and also other business partnerships. Eighth house is about your the hidden things about you, which doesn't come out in the surface. So and also hidden knowledge. So a lot of occult and mysticism is seen from the eighth house. It also talks about the longevity. That's आपका age. कितना होगा लगभग उस चीज को लेकर. नाइन्थ हाउस इज अबाउट योर भाग्य, जिसको कहते हैं योर डेस्टिनी, सो एंड योर फ्यूचर. टेंथ हाउस इज अबाउट योर कर्म, जो आप वर्क करोगे, एंड मोस्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, बेसिकली बिजनेस सूट्स यू. योर फादर्स लक, फादर्स नेम, और आप अपने फादर का बिजनेस फॉलो करोगे कि नहीं, ये चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं. 11th हाउस इज अबाउट द गेन्स फ्रॉम योर कर्मा. सो आप जो काम कर रहे हो उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, योर फ्रेंड सर्कल, ये चीजें हम देखते हैं. एंड योर 12th हाउस इज द फाइनल हाउस ऑफ बेसिकली द मोक्षा हाउस, इट्स कॉल्ड, जहाँ पे हम लॉसेस भी देखते हैं. तो
इस तरह से द 12 हाउसेस आर फॉर्म्ड बेसिस ऑफ हाउसेस के कॉम्बिनेशन पे जब हम टैरो कार्ड्स पुल करते हैं. So we get an answer whether you're talking about job, you're talking about marriage. So we'll see the 7th house. If we talk about job, we'll see the 6th house. तो इस तरह से हम टैरो कार्ड रीडिंग इस तरह से एस्ट्रोलॉजी बेसिकली फॉर्म हुआ है. Okay. So you have mixed both of them combined in a way कि जहाँ पे दोनों के एजुकेशन में दोनों के नॉलेज के बेसिस पे you can give it better. Yes. Interesting. Let's say you can predict future, है ना? Yeah. So ये खुद के साथ कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है रिलेशन विद योरसेल्फ, है ना? If you can see future with the study of if you can see future with the study of कोई एक सर्टेन स्टडी के साथ कोई फ्यूचर देख पाते हो, तो वो खुद के साथ करते हो कितना कॉम्प्लेक्स हो. डू यू रीड योर कुंडली आल्सो, डू यू डू सच थिंग? So it actually, honestly, it all began because I wanted to study, know about things about myself, how things were going and why certain things were happening. ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये सारी चीजें बहुत कुछ, और कब तक होगा, या when will be a good time period or a bad time period and things like that. These questions used to come like normal. हर एक कोई होता है ये questions, right? So yes, to know about and read about your future, the first and foremost thing we are taught, any astrologer is taught that पहले तो अपने जो डेथ है ये फैक्टर को तो हम स्टडी नहीं करते हैं, दो वी नो हाउ टू डू इट, बट ये हमें बोला ही जाता है कि we wouldn't do this reading for anybody and it applies for yourself also. So सबसे पहले तो ये होता है, बट yeah, out of curiosity people definitely try check it. अभी आपने बोला तो मुझे भी करने का मन है, like I want to know that. Yes, वो तो होता ही है, but then that's the reason. There is one more reason why we are asked not to study it, because birth and death are the two things that actually even the best of astrologer कोई भी हो जाए कितना भी prediction कर ले, there is always a chance of going wrong with it. The reason being, apart from your birth chart जो कि fixed है, इसके साथ में होता है आपका गोचर, which means your current day कुंडली, जहाँ पे आप हमें अक्सर सुनोगे कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो गया, या जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, या ये ग्रहण हो गया, या वो हो गया, जो अभी करंट डे इंसिडेंट्स जो भी होते रहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, आपको ये नहीं पता होगा कि अगर प्रेडिक्शन हो भी गई है तो भी कौन सा प्लैनेट आकर आपको उस टाइम पे बचा लेगा. तो बहुत जन ये बोलते हैं ना कि मरते मरते बच गया, मौत के मुंह से वापस आ गया. सो दिस इज वेयर no astrologer apart from God, the creator, nobody can predict your death or your birth. So even आप हॉस्पिटल में चाहे जितना टाइम फिक्स कर लो कि इसी टाइम पे बर्थ होना है या कुछ, वो नहीं, हाँ वो भी करते हैं. Yeah, they ask me what time is good, and any astrologer actually, it's but if you tell also what time is good, so we give a time bracket कि इतने घंटे में ये टाइम पीरियड अच्छा है, वो टाइम पीरियड है, बट एग्जैक्ट टाइम आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो there are a lot of other things which are factor. वो तो भगवान की मर्जी के हिसाब से आपने दे भी दिया. Let's say okay, मैंने आपके आके पूछा कि मेरा शादी तो नहीं हुआ, बट if I ask कि ये मुझे बच्चा जो होना है वो कब होना चाहिए, you told me कि चल 4 से 10 के बीच में, बट हाउ इट इज इन माय हैंड, मैं क्या कर सकता हूँ, जान के भी क्या. यू विल फिक्स इट विद द हॉस्पिटल. आप डॉक्टर से बात कर लोगे, आप उसी टाइम का स्लॉट लोगे, and because it's not a normal delivery, it's cesarean. So with cesarean this has become possible कि उस टाइम पे आप फैक्टर कर सकते हो, like you can give this much time period and whatever. Is it suggestible? See, of course you can use it to an extent, but like I said, आप जितना भी कर लो, ultimately it is, it's not like the astrologer is deciding this or the parents are deciding it. वो पहले से ही creator ने decide कर लिया कि this person is going to come at this so and so time. So maybe this thing happens that they align it with the astrologer. The person comes to an astrologer या वो suggest करता है. तो क्योंकि इस बच्चे को इसी टाइम पे ही आना था, तो तब उसने एस्ट्रोलॉजर का हेल्प लिया, एंड या तो वो शायद लेट, अगर वो नहीं जाता एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो या तो जल्दी आ जाता या तो लेट आ जाता. सो थिंग्स लाइक those happens, and so yeah, an astrologer is not beyond the creator, or
he is not changing, he or she is not changing any destiny. Destiny is there. It is just they are like a medium. जब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, but maybe you are not getting that answer from God directly. So there are certain mediums जिनके through ये answers कभी कभी मिल जाते हैं. So yeah, and yeah, like you said, अगर हम जानते हैं हमारे फ्यूचर के बारे में और सो द वे आई लुक एट इट इज यू कैन ऑलवेज यूज इट इन अ पॉजिटिव वे. सो अगर आपको पता है कि आप एक 4 महीना आपका पीरियड अच्छा नहीं जाने वाला है, उसके बाद मैं अपना बिजनेस लॉन्च करूंगा एंड दैट इज अ फेवरेबल टाइम पीरियड, so use it that way. So even being an astrologer, if tomorrow I want to make a certain decision, buy a house or something of that sort, I will just take it at the right time and the right with the right vastu. So these things are something that can always use it for the positive. बस एक चीज मैं बताऊंगा व्हाट आई गॉट टू नो. जैसे फॉर एग्जांपल ये वीडियो के स्टार्टिंग में आई वाज नोइंग द जीरो थिंग. अब मुझे थोड़ा बहुत जो समझा वो ये समझा है कि creator is giving some signals, yes, right? Yes. And you guys are that coders, like you know the code, and we as a normal person can see that. We have not studied that. Yes. So ऐसे आपको codes दिख रहे हैं, you can see that and you can put it in a better way in front of us. कि देखो ये लग रहा है, right? True. तो समझ गए शायद. समझ गए. I hope.